Hello friends, this is an awareness video. Awareness video about an important complaint of the cardiac disease, that is chest pain. Chest pain, as the word suggests, कोई भी पेन, कोई भी भारीपन, कोई भी दर्द जो हमारे सीने में होता है उसको हम चेस्ट पेन कहते हैं। तो सबसे पहले समझने की जरूरत यह है कि जो हमारा चेस्ट है, चेस्ट कैविटी है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से एजा है जिनकी वजह से चेस्ट पेन हो सकती है। तो द ऑर्गन्स दैट आर हाउस्ड इन आवर चेस्ट कैविटी, the vital organ, the very important vital organ, the heart, lies in the center of the chest cavity, and surrounding the heart are two lungs. So again, there are vessels that are connecting our heart with the lungs. तो vessels होती हैं, नसें होती हैं, and the torso proper, which is formed by muscles and bones. Chest wall cavity is surrounded by the chest cage, which is formed by the muscles and the bones. And on the lower side of the chest cavity is our abdominal cavity, which has got important organs like stomach in the center of the abdominal cavity, upper part, then pancreas, then on the side we have duodenum, then we have got gallbladder, liver. Any pathology, any disorder related to these organs can give rise to chest pain. But at this time we have to predominantly talk about the chest pain that arises from the heart, because that chest pain is detrimental if it is not recognized early. So, chest pain can be because of the cardiac causes, because of the causes, diseases of the heart, because of the pulmonary causes, lung causes, because of the vascular causes. The disorder is in the vessels which connect the heart with the lungs, the musculoskeletal causes, the causes that are related to the bony cage, and it can also arise from causes like abdominal cavity organs. We have like duodenum, pancreas, we have pancreatitis can also give rise to chest pain sometimes, duodenal ulcer, acute cholecystitis. These are the abdominal causes. But our focus is on the cardiac causes of chest pain. Any pain which is cardiac, that's called angina. And the three broad variants are, one is the classical chronic stable angina. ऐसी पेन, ऐसा सीने में दर्द जो चलने से ज्यादा हो, जो एक्साइटमेंट से ज्यादा हो, जो इमोशनल आउटबर्स्ट से ज्यादा हो. If you exertion, like if you go upstairs, if you go uphill, the pain increases. That is called chronic stable angina. And there are relieving factors. आप बैठ जाएंगे, पेन कम होगी, इमोशनल स्टेबलाइजेशन होगी, पेन कम होगी. या there are certain medicines that are called nitrates. If you take those medicines, pain is relieved. That is a chronic stable angina. The second part of the spectrum is the unstable angina. पहले आपको बैठे बैठे पेन नहीं होती थी, चलने से पेन होती थी. अब आपको बैठे बैठे भी पेन हो रही है. पेन की सिवेरिटी एंड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है. पेन हैज गॉट एन एक्सेलरेटिंग टेम्पो, एक क्रेसेंडो पैटर्न है. तो दिस इज कॉल्ड अनस्टेबल एंजाइना. एंड द थर्ड पार्ट, द सेवेरेस्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम, इज द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसको कॉमन पार्लेंस में हम हार्ट अटैक कहते हैं. सडन सीवियर सेंट्रल चेस्ट पेन्स, predominantly with radiation to the neck, to the jaws, right arm, left arm, abdomen,
any radiation from the navel, belly button to the nape of the neck. And there is profuse sweating, diaphoresis, feeling of impending doom, severe chest pain, उसको माइकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं। तो जैसे कि हम कार्डियक डिजीज में कहते हैं कि टाइम मीन्स मसल। द एम ऑफ presenting this video is that chest pain needs to be recognized early. As we all know that India has turned into an pandemic of cardiovascular diseases. It is the diabetic capital of the world, diabetic capital of heart failure and cardiovascular diseases. So any patient who feels heaviness in the chest, किसी भी पेशेंट को जिसको भारीपन लग रहा है सीने में, पेन हो रही है सीने में, जो और जिसको रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट हो, कार्डियक रिस्क फैक्टर्स। तो कार्डियक रिस्क फैक्टर क्या है? कोई भी ऐसा फैक्टर जिसके होने से आपकी बॉडी में हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, ये चीजें होने के चांस ज्यादा होते हैं, उनको हम कार्डियक रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं। लाइक वी हैव गॉट हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओबेसिटी, सिगरेट स्मोकिंग, हाई कोलेस्ट्रॉल जिसको डिस्लिपिडीमिया बोलते हैं, वेरियस वेरिएंट्स। तो ये सारी चीजें जो मेजर कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर्स है, जिनको ये हो, वो चेस्ट पेन हो, ही शुड सीक इमीडिएट मेडिकल कंसल्टेशन। Rush to the nearest medical center. Get yourself checked. Do a basic electrocardiogram. Because if we lose a minute, we are losing the muscle of the heart. Basically, there is blockage in the vessels of the heart, abrupt blockage in the vessels of the heart. And until we don't open it, there is progressive damage to the muscle of the heart. So, just an awareness that if you have chest pain, don't take it easy. इसको आप गैस मत समझिए, इसको आप कोई स्प्रेन मत समझिए, अपनी डॉक्टरी नहीं करनी है। नियरेस्ट मेडिकल सेंटर में जाना है, डॉक्टर साहब से मिलना है, ECG कराना है, and the doctor is the best judge to decide. Thanks a lot.